ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம். நமஸ்காரம். நாராயணியம்ல இப்போ 27வது தசகத்திலேருந்து படிக்கலான் இருக்கேன். ஓம் ஸ்ரீ ஹரயே நமஹ. துர்வாசாசுர வனிதாப்த திவ்யமால்யம் சக்ராய ஸ்வயமுபதாய தத்ர பூயः நாகேந்திர பிரதிமிருதிதேஷ சாபசக்ரம் காக்ஷாந்தி ஸ்வதிதர தேவதாம்சஜானாம் शापेन प्रतितजरेत निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाध्या कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाण प्रभव समं भवन्तमापुः ब्रह्माध्यैः सुतमहिमाशिरं तदानीं चिरं तदानीं प्रादुष्यन् वरद पुरः परेण धाम्नां हे देवादितिजकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमततेति पर्यशास्त्वं सन्धानं कृतवती दानवैः सुरौघे मन्थानं नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् गगेन्द्रे सद्यस्वं विनिहितवान् पयोधौ आधाय धृतमथ वासुकिं वरत्रां पातोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथनविधौ सुरासुरैस्थैः व्याजात्वं भुजगमुखे करो सुरारी शुद्धात्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यतिततमेषु तत्प्रियैषीः प्राणैषी कमटतनुं कठोरपृष्ठां वज्रादिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्बोधे कुहरगतेन वश्मना त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथमुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति तदादराधरेन्द्रे निर्मेतु दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्य द्वितयघनेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन् विवृधस्तान् उद्दाम भ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्र न्यस्तैकस्थिरतर हस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशाधय प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुनुरुपात पुष्पवर्षाः दैत्योघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदात्ते कारुण्यात् तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान् दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमति तेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुग कृष्टसर्पराजः सम्राजन् पलनपुरेश पाहि रोगात्. ओं श्री हरये नमः. दशकं 28. गरलं तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नो गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थं विमतत्सुसुरासुरेषु जाता सुरभिस्तामृषिशून्यधास्त्रिधामन् हयरत्नमभूदते भरत्नौ द्युतरुच्छाप्सरसुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्यां विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकां व्यतारीत्
सकलोपहृताभिशेषजनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिकीर्भिः अभ्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुग्ध त्वदपाङ्गैरव भूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहार प्रमुखैस्ताम् अमरादयोन्वभूषन् वर्णस्रजमातभृङ्गनादां ददती सा कुचकुम्भमन्दयानां पदसिञ्चितमञ्जुनूपुरा त्वां कलितव्रीलविलासमाससाद गिरिशत्रिहिनादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमालाम् उरसा तरसा ममानिथैनां भुवनानां जननीमनन्यभावां त्वदुरो विलसत्तदीक्षणश्री परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहनविभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदास्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्भुराशेः अमृतं कलशे वहन्कराभ्याम् अखिलातिं हरमारुतालयेश। ओं श्रीहरये नमः। दशकं 29। उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणान् अनुनीय देवान् सद्यस्थिरोदधितदेव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूत्यकलहादिदिजा बभूवुः श्यामावृचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरां त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुला प्रतिययुः त्वदुरोजकुम्पे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामिति आरूढरागविवशान् अभियाचतो मून् विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः मोदात् सुधा कलशमेषु ददर्सु सा त्वं दुच्छेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाणां पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेवदैत्या लीलाविलासगतिभिः समदासुधान्ताम् अस्मास्मियं प्रणयिनीत्यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्धपरिपीतसुधं व्यलावीः त्वत्तः सुदाहरणयोग्यफलं परेषु दत्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरे तमूचतिरणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाभिरासीः त्वं कालनेमिमथमालिमुखान् जघन्त शक्रो जघान बलिजं भवलान् सपाकान् शुष्काद्रदुष्करवधे नमुचौ चलूने फेनेन नारदगिरानरुणोरणं त्वं योषावपुर्दनुजमोहनमाहितं ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः भूतैः समं गिरिजयाच्च गतः पदं ते स्तुत्वा प्रवीदभिमतं त्वमथोतिरोधाम् आरामसीमनि च कन्दुकगातलीलालोलायमाननयनां कमणीमणोन्यां त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसनाममनो भूः
वेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्ग भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपधाव्य देवो वीर्यप्रमोक्षविकसत्परमार्थबोधः त्वन्मानिदस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्वमववातनिकेतनाथ स्वामिये चरणमय्यप्पाम् ओं श्रीहरे नमः. दशकं 30 वामन अवतारम्. शक्रेण संयतिहतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुक्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरां त्रिलोकीं चक्रे वशे स तव चक्रमुखात् भीतः पुत्रातिदर्शनवशा अदितिर्विषण्णा तं काश्यपं निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं सा द्वादशाहमचरत् त्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामा चतुर्भुजवभुः स्वयमाविरासीः नम्रां च तामिह भवत्तनयो भवेयं कोऽप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निधददानी प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तम् पुण्याश्रमं तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृततूर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्यां त्वं तत्क्षणे पटुतमं वटुरूपमादाहाम् तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जी दण्डाजिनाक्षवलया धिभिरर्च्यमाणः देदीप्यमाणवपुरीशकृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भाविमहिमोचितगौरवं व्यावृण्वतेव धरणीं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मतिरनाथमिवाददानः दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुम् तां नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषि त्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनो नु सनत्कुमारो योगीनुकोऽयमिति शुक्रमुखैष शङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्मघसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिनिज्य पादौ तत्तोऽयमन्वद्धृतमूर्धनितीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतो नुतदितं दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यं स त्वं विभो गुरुपुरालय पालयेताम् ओं श्रीहरे नमः. दशकं 31 प्रीत्या दैत्यः तव तनुमहः प्रेक्षणाः सर्वतापि त्वामाराध्यन् अजितरचयन् अञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं ते समभिलषितं विप्रसूनो वद त्वं व्यक्तं भक्तं भवनमवनिं वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणा बलिगिरमुपाकन्यकारुण्यपूर्णोऽपि अस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां
प्रार्थयामासि तत्त्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यं न वा स्यात्। विश्वेशं मातृपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृण किममुनेत्यालपत्वां सदृप्यन् यस्मादपात्रिपदपरिपूत्य क्षमक्षेपवादान् बन्धं चासागमत् अददर्होऽपि गाढोपशान्त्यै। पादत्रया यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामो ततोऽयं। दैत्याचार्यः तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणातं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेव बभाषे। याचत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं। चित्रं चित्रं सकलमपि सः प्रार्पयतोऽयपूर्वम् निस्सन्देहं दितिकुलपतो त्वय्यशेषार्पणं तत्व्यातन्वाणे मुमुचुर्षयः सामराः पुष्पवर्षं। दिव्यं रूपं तव च तदितं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैः अवृद्धदवधीकृत्य विश्वाण्डपाण्डवम्। त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डीतो यैः असि चदपुनात् यज्जलं विश्वलोकान्। हर्षोत्कर्षात् सुबहुननुते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीं निघ्नन् भुवनमचरत् जाम्बवान् भक्तिशाली। तावद्दैत्याः त्वनुमतिमृते भर्तु आराब्धयुद्धाः देवोपेतैः भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन्। कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किं वो युद्धैः इति बलिगिरा तेथ पातालमापुः। पाशैर्बद्धं पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तातीकं दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरोऽसि। पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् इत्यकम्पं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो आनयन्नस्तवीत्वाम्। दर्पोच्चित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदव विजयी वासवत्वं शपश्चात्। मत्सायुज्यं भज च पुनरिः अन्वगृह्णा बलिं तं विप्रैः सन्दानितमखवरः पाहि वातालयेश। ஓம் ஸ்ரீ ஹரையே நமஹ. இப்போ 27லேருந்து 31 வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன். 5 தசகங்கள் படிச்சிருக்கேன். ஓம் ஸ்ரீ ஹரையே நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ குருவாயூரப்பா சரணம். ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகா பெரிவா சரணம். நமஸ்காரம்.